project by Deep Rajan Infraspace LLP, Tapadia City Centre Mall and State Bank of India. The session is of utmost relevance to the chartered accountants present here, as this topic deals with the current scenario of CA practice, global scenario and new opportunities. These opportunities appear to be crossing national borders, with new opportunities opening up day by day, minute by minute. And to deal with this topic, who can be better deliberator than our own past president CA Nilesh Vikamsey sir, whom we are all eager to lend our ear to. To move ahead, I would like to request CA Govind Bidwai, Chairman Amravati Branch, to escort CCM CA Piyush Chhajer sir and Treasurer WIRC CA Ketan Sayya sir to the dais. Speaker for the session, CA Nilesh Vikamsey sir on the dais. I request a huge round of applause from everyone. Request CA Madhur Zawar sir to please accommodate the dais. Extend our warm welcome to the dignitaries present here. I would like to request CA Naveen Kriplani ji to give a floral welcome to our speaker of the session, CA Nilesh Vikamsey sir. I would like to request CA D.D. Khandelwal sir to please welcome CA Piyush Chhajer sir with a floral bouquet. I would like to request Madhur Zawar sir to please welcome CA Ketan Sayya sir. I would like to request the CCM, CA Piyush Chhajer sir to please deliver the opening remarks. Thank you very much. Good afternoon, everyone. A tough time after the lunch, but I'm sure we have amongst us the speaker, our honorable past president, Shri Nilesh Vikamsey ji, who will keep you awake. Even after the 20 years in the practice, whenever I listen to him, I feel it is a completely new outlook, completely fresh. And when you go home from here after listening to you, you are definitely bundled, your pocket is filled up with the avenues, ideas and thought processes. So I'm sure, even after this lunch, he will keep you awake, he will not let you sleep, I am sure. Other dignitaries on the dais, Regional Council Member Ketan Sayya, Madhur Zawar, Naveen Kriplani, Central Council members, Regional Council members, speakers for the day. Good afternoon once again and welcome to you to this session, the second technical session, basically on the global opportunities and avenues. Coming to as an opening remark, we all know there are a lot of opportunities in the way for a chartered accountant. A lot of discussion is happening that whether the traditional practice will die out or chartered accountants should look into the new areas like forensics, AI, blockchain, social audit, BRSR reporting. The question also arises at the small places or the small towns, small districts, what could be the practice if the traditional practice is dying out? Whether there are similar opportunities which we look at, which we speak on a global level,
is really available at the particular district level or the rural levels also. Whether the chartered accountants coming from a small town also can equip themselves, scale themselves to that particular extent and actually get seize of these new opportunities. I am sure after hearing Nilesh bhai, our ideas, our thoughts will be quite clear into this matter. Coming to my perspective of it, the very two important things when I talk about the future, the first question that comes to in my mind, are we looking at the growth in the terms of the money value or in the terms of the excellence? That's the most important. We are a part of a professional body, which is the single largest accounting body in the world today because of the strength of its students and members. And we are into a profession. Obviously, a lot of time we speak that the profession also has to be run like a business. You should think like an entrepreneur. But at the same time, it also put me into two minds that whether when you actually want to excel in the profession, whether the money should be an important criteria or the excellence should be a criteria. Whether I should strive for getting an expertise into a particular subject. So if I'm doing an indirect tax and I can see the speakers today morning who are truly an experts in the indirect tax, whether their aim, their objective was to really make money out of it, make a living out of it, or really simply the objective was to excel in that field, wherein they can actually be called as an expert of GST. Money will come in the way, that would be an idea, and that is the thought process which we always think about it. So I am sure the speaker today will put light upon it. Secondly, the second area which I always think is, even in the existing traditional practices, there is a much need of increasing our remuneration to the extent. If I think of an audit, if you go 20 years, 30 years back, the risk of doing an audit was always there, but it was not been recognized, that risk. So risk was been treated as a low and the audit fees was good. But if you see in the last 20 years, development which has taken place, audit risk has gone high. The remuneration for that audit has not gone up. So I believe we need to work upon it, wherein the audit fees also now goes above, which is in commensurate with the risk, and therefore this area would also be quite impressive in next 2 decades, I believe. There has been a lot of thought process when I come from the city of Mumbai, and I've been seeing a lot of big firms, which we call big four firms, are actually leaving the audits. So the question is, why people are leaving an audit? Is it because of the high risk, or the risk and the remuneration is not matching? If the risk goes high, I think so there's nothing to worry. You have to equip yourself. You ensure that you are appropriately being paid for that particular risk. If it is that, then I think so nobody would like to come out of the audit, and that could be another good area. Still I feel, even in the times to come, apart from the newer areas, newer avenues which will be listening to it. So it's a very two important things. Other thing, at the level of the district, small towns, I always feel that there is still a concept wherein individual chartered accountant provides holistic service to its clients. Yes, it's a good idea to have all services under one roof. But I always believe, as an individual chartered accountant, I have a limited 8 hours in a day, 40 hours in a week, out of 164 hours of a week, which is hardly 30% of my time. So I need to decide. I need to be very decisive in this manner, which field I am choosing it. Is it that I am choosing all the fields? I would do taxation also, I would do GST. Then in that case, whether I am able to actually get the specialized knowledge of that particular field. If I am not getting a specialized knowledge, whether I can charge the clients to that particular extent. So all this question arises to my mind. So always I believe that there has to be a specialization at each level. For specialization, obviously, you will have to join hands. Even in the small towns, 2 chartered accountants, 3 chartered accountants will have to come together. One specializes into IDT, audit, taxation. Then only the scalability can work. That's what my belief is. So with this opening remarks, now I thank you very much for your patience, and I would like to hear Nilesh bhai. Obviously, we are already running late, so I would not take you much of time. Thank you very much. Thank you. Thank you, Piyush sir. Piyush sir has to head to Bhopal today for the Direct Tax National Conference. We would miss your presence here, but we would like to extend our warm greetings to sir by presenting him a memento. I would request CA Mahesh Ladda sir to come forward and present a memento to CCM Piyush Chhajar sir.
Now I would like to request CA Gauri Kakrania to briefly introduce Nilesh Vikamsey sir. We'll do it in very short. CA Nilesh Vikamsey sir, before introduction he wanted us to skip his introduction. So that's introduction itself. In very short, CA Nilesh Vikamsey is a person of professional vigor, high integrity and technical expertise. He was elected as the president of the ICAI for the term 2017-18. Having gained deep insights into the profession as a fellow member with more than 30 years of impeccable professional standing, he is widely commended and credited for his key role in contributing towards inclusive as well as exclusive growth of Indian accountancy profession. He is currently a member of the Advisory Committee on Mutual Funds of SEBI, Risk Management Committee of CDSL. He's been nominated by the central government to the Board of Governors of the Arun Jaitley Institute of National Management. He's a member of the West India Council of Indo-American Chamber of Commerce. He has been an ex-chairman and director of the Federal Bank from June 2011 to June 2019. He has also held the directorship of SBI Life Insurance Company Limited from April 2012 to 2020 September. He holds directorships in many reputed public and private limited companies, some of which are IIFL Finance Limited, Thomas Cook India Limited, PNB Housing Finance Limited, IIFL Wealth Management Limited, Gati Limited, Nippon Life India Trustee Limited. He is a member of the IRDA. He is also on the Audit Advisory Board of the CAG and from the Insolvency Law Committee and LLP Committee of MCA. So words fall short and time will even fall shorter if we keep on introducing you. With this, I urge you all to please welcome CA Nilesh Vikamsey sir with a huge round of applause. Thank you for the kind introduction. Morning, my wife was here. I hope she was here to see, So, but anyway, be that as it may, Central Council colleagues, Piyush Goyal, Durgesh Bhai, Mr. Chitle, past chairman of WIRC, Murtuza. I can see Piyush Bhai in the audience. Ketan was on the dais with me. Abhijit, I can see Saurabh, Sanjay, and Nilesh is somewhere back. If I'm missing out, just because the light is coming on my face, please pardon me. And all the seniors in the profession, my one request, I think a lot of audiences are sitting in the back. आपको बाहर phone call लेना तो चले जाना, but come ahead. This topic is not, all the other topics what Sunil Gawala spoke. So you can come ahead. जरूर मत आपको बीच में जाना हो तो बाहर चले जाना. So there will be more interaction, more eye contact. Otherwise, this light is just on me. I can't see. So whoever, and we'll try to do interactive, but with the time constraint, I think there will be a challenge. The topic which has been asked by the, first of all, let me thank Seema for requesting me to come here, and it was a desire to come to Shegaon, take darshan of Gajanan Mama. I'm still, Gajanan Maharaj, still pending. After this session, I'll be going for the darshan, and so it's a huge opportunity. I could not come during the 9 years in my council, and later on, thanks to COVID and all, not been here, but this is a good opportunity to meet all of you and to take the blessings of Gajanan Maharaj. The topic which was given to me is current scenario in CA practice, global opportunities and new avenues. This topic is, I am very, very sort of close to this topic. I have been speaking on this for a number of years and evolving. And what I am going to speak, friends, is not only theory. As a firm, I belong to an 86-year-old firm now. We have put it to practice. Many of the things, or most of the things which is going to be in the presentation. One area where we need to do still more, though we have done quite a bit, is on the technology front, but I feel dil mange more. It is technology. Whatever we do is not enough, I think, and as a profession, I feel we need to do, whether it is Akola, Amravati, Shegaon, Nagpur, Solapur, wherever you're coming from. I think that is one area where we need to do more and more. We're not done enough. And the rate at which the change is happening in technology, and we'll speak more about that. So, coming to the, just to set the context, what I said before getting into the opportunities, first let us see where our country is poised. This presentation has few slides which I made in the World Congress of Accountants. I was the panel moderator where we had Injati Srinivas, the chairman of Gift City. We had Mr. Deepak Bagla, who is CEO of Invest India.
one ENY partner who is in charge of the global delivery system. So 3 of them were there, and I was asked to moderate the panel discussion. And I just asked how much time I had. So 5 minutes to beginning the session and 5 minutes to end. The World Congress. Unlike here, it was absolutely time to time. I said I will not speak in the end. Give me 10 minutes. I'll make a presentation. Because I wanted to communicate what India is to the accounting world internationally. What India is known to the investing world. Investors are flocking India. We see what the capital markets are. So a few slides out of there. So that will be a base of what the opportunities are there for us. Then what is the current position of our practice? Some statistics around this. Challenges in the practice we face, practice management strategies, some areas on clientele and fees. We keep on cribbing. Clients are not paying us fees. साल भर के बाद में fee आती है, 3 साल के बाद में. So we talk on that. And again, experiential talking. It is not theory. We have gone through the same phase where we were not getting fees and all. What are the ingredients of successful practices? What are the growth strategies we can have? I will not speak on specialization versus new areas. Most of us are here. I would request the youngsters here to look at those slides later on. Some slides, then practice and technology and some final thoughts. But it's a huge presentation. I will not be able to cover everything given the time constraint, but we'll see whatever maximum we can cover. So friends, this is where India is. We took 58 years to reach a $1 trillion of the GDP. That 58 years, in the next $1 trillion came in 7 years, from 2008 to 15. The next trillion came in 7 years, from 15 to 22. But the next trillion, 3 to 4 trillion, is going to come in 3 years. It is expected by, either it's already there or we are going to be there shortly. And again, another trillion in 3 years, and then it will be 18 months and 2 years to 18 months. That is the rate of growth at which the India is going to grow. 58 years for 1 trillion, 7 years, 3 years, 2 years and 18 months. This is the trajectory. And what is the base for the trajectory? What is the banking access we had for our people? It was 35% in 2014. It has gone up to 78% in 22 as families, and is going to go up to 90% by 2034. Life expectancy is expected to increase from 66 years, has gone up to 70 and is expected to go to 80 years. Logistics cost, this is the biggest challenge of our country, which is 13% right now, in whatever cost we are having, which has gone up to 16%. It's not a good sign from 14 to 22. But government now, you have heard of PM Gati Shakti. The whole idea is how do we reduce the logistics cost. So that's going to go down to 8%. Government is working very seriously on that area. Agricultural productivity has gone up from 4 tons per hectare to 5.3 and it's going to go up to 7.4. The digital connectivity, which was 15% in 2014, is 47% in 22 and is going to go up to 80% in 2035. And this, friends, this digital connectivity is again the base for our growth. And the retail market share of organized sector, which was 8% in 14, has gone up to 10%, is expected to go to 50%. Now this is very important. All of us know the retail sector, all of us, right from Kirana stores to retail shops and all. If we organize retail, the likes of Flipkart, Amazon, you see, I don't know about you, but in my house, every day, I don't know how many Amazon and Flipkart parcels I'm getting. It's crazy. It is just crazy. I don't do that with my kids. कुछ भी है Amazon से बुला रहा है, मैं बोला एक साथ में सब कलेक्ट करो. हाँ आप बोल दो क्या कार्ट में आपका भी ऑर्डर डाल देंगे. आपको कुछ लेना है, there is a cart. So in the cart you put the order and it will come. And what efficiency! Once just immediately after COVID, I think I had the blades got over, the Gillette blades, and I think around night 10 o'clock we would have ordered. Next day, I think 8 o'clock or 10 o'clock, I'm getting my blades at my house. So how it's going to impact? It's going to have a huge impact on all our clients also. On the ease of doing business, of course, VA startups will say there is no ease of doing business, and I would slightly agree with you because we are facing the brunt. GST, the amount of years we spent, with the technology problems, etc. But this is the transition which is happening, which is going to help us in future on the economic side. So from 142 we are at 63. They have stopped the ease of doing business after 20. There were some challenges with China and all by this agency. So, but I'm sure from 63 we would have moved ahead in the last 3 years, not behind. And what is the, again, so much thing happening on infrastructure. You're seeing the amount of roads,
the number of ports developments, I talked about Gati Shakti, the Gift City, the DBT, which again has been a game changer. The direct benefit of subsidies to the recipients. Earlier 80% was getting leaked. Rajiv Gandhi has made an official statement in the parliament earlier when he was alive. And now substantial benefit going to the individuals. And which is again coming back in the economy as a spending, this thing. Corporate tax gone down to 15% for new units and all of you. I will not take more time. Labor reforms happening. There are a lot more to do on the labor side. PLI scheme I'll speak a little bit later. The amount of, boost it is giving to the economy. The insolvency and bankruptcy score. Who in the world, I think the seniors who are here, we could not have imagined the likes of SR, Bhushan would get, through the IBC, the way the management changed, way the shareholding changed to NCLT. Yeah, there are challenges. If you ask me now, currently there's huge backlog in the NCLT. But this is the transition which India is going through. The current problems we are facing, whether GST implementation we faced for the last 5 years, 6 years, or whether now IBC. But we could not even think of this. India में बोलते थे company को जन्म देना easy है, मरण होता ही नहीं है कभी. Dissolution or winding up a company was next to impossible. But now through IBC we are seeing so many things happening. RERA. Again, the builder lobby will scream, RERA आ गया तो ये हो गया. But in my view, again, that's the biggest change in the real estate side. And this change is going to bring in a lot of more funds in that sector. So, I was talking about PLI scheme. How much is the total PLI incentive committed? 2 lakh crore across. And this, friends, this data is of November. This would have changed after additions which have been made. 2 lakh crores across 14 key sectors is the commitment of the incentives. It is expected to generate capex of 4.40 lakh crores in the next 4 to 5 years and could fast track the capex plans for most of the private sector. What is the incremental revenue expected over a 5-year period for this PLI? 40 lakh crore and employment of about 60 lakhs. I will not get into where the PLI is going. Again, I told you this digital, sorry, I'm moving here, I'm not moving there, my apologies. This is not connected. This is the PLI scheme. This is the digital, I would say the foundation which is leapfrogging. Now we are more advanced than US, etc. There's a joke, Jaishankar went to US, and I think Sun is there. They went to a restaurant, our external affairs minister, and the restaurant in the COVID times, the restaurant asked for the our COVID certificate. So his son is trying to find out physically koi paper mein hai, kidhar hai. And Jaishankar just opened his mobile and showed the COVID certificate. There is only one thing. But your Aadhaar, the JAM Trinity, Jan Dhan, Aadhaar mobility, the DigiLockers, Umang, the Bheem, all this is going to sort of leapfrog, on the economy side. So the broadband highway, the mobile connectivity, internet with e-governance. So a lot of and again, this is the pain area we will be going through some of the areas, but this is going to make a huge change. We were always saying that China is the manufacturing hub of the world, and we of course are lagging substantially behind. It was 15.6% in 2021 of the GDP manufacturing, which is expected to go to 21%. Even as we speak, thanks to PLI, we are the second largest manufacturer of mobile handsets in the world. And the growth has been 14 times in the last 8 years. The mobile handset which we manufacture. The expected manufacturing revenue from 2022, which is 35.7 lakh crore, is expected to go to a base case of 1 lakh. This is typical, I would say, investment analyst presentation. The base case is 120 lakh crore का तो revenue होगा by 2032, 10 साल के अंदर. And the bull case is 160 lakh crore. And the bear case, which is, minimum 73 lakh crore. So this is the estimation which is there. You talk of defense, automobiles, gems and jewelry, electronics, engineering, metals. I'll not get into this. Those are the old, the new focus areas, I would say defense and all. But coming to the new areas also, artificial intelligence, geospatial systems, genomics and pharma, space economy, we saw Chandrayaan. The lowest cost, space which is there across the world. So this itself is going to go give fillip to a lot of space related, industries and economies. Semiconductor, green energy. Friends, I don't know whether I should be sharing this, but on the solar panel and all the renewable energy, the amount of growth on the exports which is happening to US is just, it's like a hockey stick. I can just reel out some number of some companies we are associated with. It's just crazy. So
So whatever is doing well, and having said that, the focus on railways, we are seeing so many new trains coming, Vande Bharat, etc., etc. Airports, number of airports increasing, number of airlines increasing, roads, ports, and the old sectors, construction, textile, tourism, food processing. I think we are not in scratch the subject in food processing. I think much more to come. Tourism, I don't know whether you are aware, I think you must have read, Varanasi. Banaras pehle, I think some years back we were afraid of going to Banaras just because of the unhygienic conditions there, or the pandas chasing us, the pandits. Now you go to Banaras, I have not been. I've been to Rishikesh and I was amazed. I've been to Haridwar and I was amazed. But you go to Banaras and the amount of tourists which are there, I think almost I'm not aware of Haridwar, but in Jammu Kashmir, I think last year about 2 crore tourists attended went in Jammu Kashmir 2022. Same way Banaras will be 2 crore. Ayodhya is coming up now, the religious tourism. So this is for those members who are from Shegaon. Be ready, यहाँ पे भी explode होने वाला है. This is also religious, place. So the religious, this thing is going to go up, the tourism. Again, sectors like media, entertainment, education, banking and financial services, real estate, healthcare, which is hospitals and all, FMCG, auto, all is going to boom. I'll not, again, you can have a look at this slide, how we have grown as a country. And this is the expectation of what we are going to achieve in the next 10 years. From, GDP of 253 lakh crore to 635 crore in next 10 years. So the idea is of bringing it is, do we all want to be part of this action of the growth, India growth story as members of the ICAI? Sorry, I'm not moving there. Oh. Please. Because this laptop is not connected there. You can look at the slide later on. Coming to this, so this is where I was saying, GDP going to go up, market cap, equity market cap going to go up from 280 lakh crore to 800 lakh crore. Do you want to be part of this action or not? Do you want to be growing with this growth? Sir, I want you to focus on members practicing and be particularly Mofussil area. I'll come to that. But this is the base. See, whether it's Mofussil, ऐसा नहीं है कि India is only going to grow in the metros. India is to grow in Mofussil also, and this is the base. Thanks for pointing me out. And if you feel, I'm talking through my head, my dear sir, this is the report on Amul. Amul is a cooperative friend of mine, and this is from the annual report of last year. Their turnover was 59,000 crore last year, and their ambition is to go to 17.6 lakh crore in 2047. A cooperative has this ambition, my dear sir, and this is completely rural Gujarat and maybe all other parts of the country. It's not metros. Amul has got an ambition. This is part of the published report. You can go and have a look. So this is the ambition of Amul, and we are talking of private sector. We are talking of private chartered accountants, whether it is Akola. Please don't undermine yourself by saying Mofussil. Please don't undermine. You are as good or as bad as anyone of us. There is metro, and we are same. Coming to the now your this thing. Not only for Mofussil, even for cities. What is our current position of the practice? You said what is our current situation? This is our current situation. Risk has gone up substantially. This is my slide. Thanks for pointing me out. Several scams have surfaced where CAs are found involved or presumed to be involved. Increased expectation of regulator stakeholder society. NFRA is not only set up in 2018 but is getting active. And friends, we have read in the newspaper what are the type of fines which are there in NFRA. Cafe Coffee Day auditors got a fine of 1 crore from the firm, 10 lakh for partners, totally something like 1.5 crore, partners and firm put together. And not only Cafe Coffee Day. Number of cases are there where 50 lakhs, 1 crore fine has been there. And this is just the beginning. Again, I don't know if this is the time to speak or not. There are 2,000 firms who are doing audit of 7,000 listed companies. You may be doing some in Nagpur, in Akola, you may be doing 1 or 2. But what I can see is out of these 2,000 firms, 1,500 firms will have to move out because nobody can afford this type of penalties which NFRA is levying. I'm getting 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh if I'm doing one listed company audit. The amount of documentation which is expected, the amount of use of technology which is expected. As a single audit client, a listed company, I can't afford that. The big four are finding a challenge to meet the NFRA expectation on documentation. So just to give you a case in point,
आज ऑडिट खत्म हुआ, the auditing standards say you can do your documentation in 60 days. NFR has come around and said if any documentation is after the board meeting date and depending on the use of technology, this is an afterthought, you have created the documents later on. I have seen the documentation, but I'm only documenting it later during the course of, after the audit is over, because my focus is on, but they are not accepting that. So visualize a situation that you need to complete the documentation along with the audit. And since believe me, it is said, the big firms spend 90% time on documentation. खाली yes, no, tick mark करना है, audit कम करते हैं, करते भी नहीं है, खाली वो checklist भर लेते हैं. Mid-sized firms and small firms may be spending 50 to 70, 80% time on it, not even 10, 20% time on documentation. But that is the importance of documentation. Unless you can show that you have done the work, it is presumed that you have not done the work. Please mind my words, and I am saying you not only from NFRA, इंस्टीट्यूट की डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी एक्टिव हो गई है, बाकी सारी भी एजेंसी एक्टिव हो गई है. आप जो ऑडिट करते हो, कैसे ऑडिट किया है, बहुत जरूरी है. वो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड इन द फाइल. सो प्लीज लुक एट द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. आप कंपनी ऑडिट करते हो या कोई भी ऑडिट करते हो, प्लीज डॉक्यूमेंट. एंड आई वुड रिक्वेस्ट अकोला, अमरावती, नागपुर, ऑल दिस ब्रांचेस टू प्लीज टेक अप the sessions on audit documentation. This is very important for the members, and I would request all of you to attend. वो boring लगता है पर जरूरी है. As we speak, I am on the International Auditing Standards Board. We are trying to come out with auditing standards for less complex, for small entities. और जब तक आए नहीं तब तक we have to follow whatever standards are there. And जितने भी खराब हम लोग को भी, when in my office I started pushing for more and more documentation, I used to get a pushback. Sir, हम लोग audit करें या documentation करें? Why I am saying you will face the same situation with yourself or with your team. हम लोग audit करें, पर करना जरूरी है. आपको अगर वो काम में रहना है ऑडिट के काम में, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है. तो प्लीज, एंड NFRA इज अ केस इन पॉइंट. टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट विल डिस्कस स्लाइटली लेटर. अनदर थिंग इज कॉन्स्टेंट अमेंडमेंट्स इन GST, कंपनीज एक्ट, इंड एस, बैंक्रप्सी कोड, वैल्यूएशन, बड़ा चेंजेस होते रहते हैं. यू नीड टू बी अपडेटेड. Not only that, in our practice also constant changes because of institute. We have seen rotation of auditors brought in by the Companies Act. We have seen UDIN coming in. So a lot of changes happening. One other area which I want to forewarn you from the official area right now. Internationally and even nationally, NFRA has come out very clearly. Unfortunately, they picked up the first case of ILFS. And they said all the appointments were illegal. Reason is, the network firm of the auditors are doing huge consulting work. If you are doing consulting and if you are taking up audit, you can't do both as per under the Companies Act section 144. So this is, आप बोलेंगे अभी तो NFRA के लिए रिस्ट्रिक्ट है, पर टाइम दूर नहीं है जब this will percolate down to private companies and the other entities. So as a forewarning, maybe it may take 5 years, 7 years, 10 years to happen. I don't know when. पहले भी listed कंपनी में होगा. And world over, India and UK में there was some commission which was set up. They also decided that audit and consulting have to be separated. You can do consulting, but you cannot do consulting of the company which you are auditing. और अभी तक क्या आपने तो बहाने निकाल सकते. मेरी CA firm अलग है, मेरी क्या नाम है, the CA firm के partners are not owners of the consulting firm. All those things is not going to work. NFRA has ordered, even if you are part of a network, you can't do that. आप बोले मैं network नहीं है, we don't have common network. तो they'll see आपका कॉमन एड्रेस है, आप सेम ऑफिस से काम कर रहे हो. सो प्लीज डोंट ट्राई टू हुडविंक और फूल अ रेगुलेशन. विल बी, बट दिस इज स्लाइटली आई एम गिविंग यू अहेड ऑफ टाइम, बट दिस गोइंग टू हैपन. सेग्रीगेशन ऑफ ऑडिट एंड कंसल्टिंग. यू कैन डू कंसल्टिंग फॉर अदर एंटिटीज बट नॉट दी ऑडिटिंग. और अपने आप सोचो, मेरे पास छोटे क्लाइंट है, मैं ऑडिट भी करता हूँ, टैक्स एडवाइस करता हूँ, GST के सब कुछ करता हूँ. वी नीड टू गेट गियर्ड अप. अभी एज ऑफ नाउ इट इज ओके, बट मे बी 5-7 years down the line we need to do. Joint audits will come up. That again will throw up some opportunity for mid-sized and small firms. AQMM, we have got the author of AQMM here, Durgesh Bhai. I don't know how many of you have seen the audit quality maturity model over here. I'm seeing 1 or 2 hands. To Satish Shinoy is there. Few hands. My request is to all the seniors over here and all the people, please look at the audit quality maturity model. Now again, I'll request the branches to take it up. It will show you a road path, क्या क्या करना है. I tell you, as a firm, we are 86-year-old firm, but we got lot of learnings out of the AQMM on the HR side. Let me admit, HR side पे क्या क्या और अपने को अपग्रेड करना है, क्या करना है, करते थे, डॉक्यूमेंट नहीं करते थे. आज ऑडिट क्वालिटी में, और ये क्या है अभी, it will be
AQMM के जो results हैं will be coming on the website of the institute sometime later and maybe it may become mandatory also. तो आप audit कर रहे हो आपकी क्या audit quality है वो आपको दिखानी पड़ेगी. Sorry? Bill made mandatory from 1st of April 23. It has been made mandatory. My God, so this is news to me. So, but to all the firms who are doing the audit. Who are into the audit of listed entities and certain category of public interest entities. So listed entities और public interest entities आप जो कर रहे हो तो AQMM is compulsory and आपके जो scoring है वो भी जाएगा उधर. So just we so again earnestly request the branches to take it up as an advice and for us it is learning. How do we keep measure? This is the expectation and how do we come up to the level? Again I'll share with you to my senior colleagues here. As a firm 15 या 17 साल पहले हमारे पास एक भी HR का आदमी नहीं था. हम लोग पार्टनर लोग यहाँ काम करते थे जो आर्टिकल्स की एप्लीकेशन है, लीव है, फलाना है, ढिकना है, जो भी है सब वी यूज्ड टू डू. नाउ देन वी स्टार्टेड अबाउट 7-8 years back one HR person. Today we have got a team of 300 people, 4 HR people वो भी पूरे नहीं होते. एक बार हम लोग I'll tell you the reason why we need HR people. एक बार रोते लोग अपने पास रहते नहीं हैं. We need something called engagement with our people also, employees and partners and all. This is employee engagement. So we have cricket tournaments, inter-firm हमारी cricket tournaments होती है, Diwali get together, Navaratri, ये वो सब. So how do you keep the people happy? One is of course the work. You have to have good quality work. But apart from work, वो bonding कैसे लेके आए? तो bonding is through, especially when you grow larger. जब भी छोटे थे 2-4-5 लोग अपने ऑफिस में तो ठीक है, बट जैसे ही grow करोगे ना, I wish all of us grow. And in my view, there's no differentiation between metros and Mofussil. If you decide, and for the youngsters, I'll give you suggestions how you can grow out of Mofussil also. And again, एक चल रहा है. क्या हो गया? नहीं, जस्ट टू ये मैं इसलिए मैंने लिस्टिंग किया, आप सब जानते हो ये, पर गवर्नमेंट का डायरेक्शन कहाँ है आपको दिखेगा. वेदर इट इज जनधन, आधार, इनकम डिक्लेरेशन, डीमोनेटाइजेशन, स्ट्राइक ऑफ कंपनीज ऑन द कंपनीज एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एंड बेनामी ट्रांजेक्शन, मर्जर ऑफ बैंक्स, RERA, IBC, GST. Government is very clearly, going in the way they want to, root out all the, I would say problematic things. So the regulatory side, कैसे जा रहा है, किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट जा रही है, and we need to be cognizant of. We cannot remain in the old world. Some statistics. Yes, sir. बेटा क्या हुआ? ठीक है, नहीं तो बोल दो तो मैं ऐसे बोल. सो वी हैव 3,82,000 members as on 20th May 23. 1,50,000 are holding full-time COP. 2,32,000 are not having COP. So roughly 39% in practice if you look at just this number. But what I did is I got the number of CAs working in CA firms, large firms, mid-sized firms अपने यहाँ पे जिसके पास COP नहीं है. So they are roughly 21,000. So 1,71,000 are in, I would say practice if you consider the CA employees are not holding COP, and that is the, ये भी this is the regional breakup से ज़्यादा अपने को relevance नहीं है. This is more important from your specific this thing. Shegaon, Akola, Amravati, how many are in COP बाद में आप देख लेना, and how many full-time COP persons per lakh of population. इसमें गलती हो सकती है, पर I am told शेगांव की 2.5 लाख की population है, मेरे statistics में 81,000 है. तो पॉसिबली जो सेंसस लिया होगा, आगे का सेंसस लिया होगा, तो यू मे मॉडिफाई दैट द पॉपुलेशन. सो दिस इज अगेन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ हाउ मेनी पार्टनरशिप फर्म्स. यू सी हाउ आर फुल प्रोफेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सोल प्रोप्राइटर लेवल एंड अप टू 5 पार्टनर्स. आप देखो मोर देन 5 पार्टनर्स ओनली 157 फर्म्स, 10 to 20 पार्टनर्स ओनली 61. ये वेस्टर्न रीजन की है. फिर अपने more than, sorry, this is only Mumbai, more than 20 partners is 11, more than 30 partners up to 53, and more than 50 partners only 3. अभी LLP के आने के बाद you can have up to 200 partners, but only 3 firms in Mumbai more than 50 partners.
So this shows this queue, and बाकी जगह तो आप देख ही सकते हो ये. I couldn't get data of Akola and the neighbor areas from the institute just before this presentation was made. I've been chasing up, but वो data नहीं मिला, but otherwise I would have given you this data. So this is the skew of the partnership. So this needs to change. If you want to grow, अपने को अगर grow करना है, we'll have to collaborate, we'll have to work together. This type of lone rangership will not work. And why I'm showing this particular slide, you look at the years from 2006, when 2006 to 2008 was the boom years. 2008 the global financial crisis happened, but by the time it could hit us in India, it was 2011. The number of practice units were more or less stagnant at 46,000. बाद में मंदी आई, hardly any greenfield or I would say brownfield projects coming up. So then it started spiraling. और अभी आप देखो again it's slightly tapering off. 2019 में 75,000 firms से 89,000 2020 में, but now it is only 92,000 in 22. Only 3,000 have increased. So ये अभी time आ गया stagnation. Indian economy is booming. People will be moving more to industry than to the practice. There will be a lot of demand there. Now, how many of you feel that there's not enough work for all of us, chartered accountants? Now, after all the changes, tax audit की limit बढ़ा दी, GST का, how many of us feel that there is not enough work? You feel there's not enough work? एक second, let me explain this right. There are 43 crore PAN card holders. This is data of 2019. Unfortunately, I couldn't get the latest data from the CBDT. 6 crore returns were filed in that year, in 2019. Count of taxpayers was 8 crore. And the difference between the PAN card holders and is 37 crore. Now you will say, PAN card तो easy है, किसकी taxable income नहीं है तो भी आ जाएगा. Right? I think that's a normal this thing. But can we agree that at least out of this difference of 37 crore, 10% should be taxable? I'm saying 10%. Is it a bad estimate? 3.73 crore returns can be filed if you look at this 10%. So what is needed is educating people to be on the right channel, and कहीं ना कहीं तो पकड़े जाएंगे आगे जाके. And you're seeing now the spurt of this number which is 6 crore. This year, only in July, this number touched 6 crore 84 lakhs by July. And it's going to increase now as with the late filing which will happen. So this is going to increase. So, and same thing for partnership firms, etc. I think the slides will be shared with you. You can. So in my view, what is required is more educating people to be on the right side of the law, file their returns, etc. And that itself is at the base level. And we'll see bigger opportunities also as we go. Now, sir, is this the problem which we face? Low level of fees? Fees realization? अपने आती नहीं है, साल पर 2 साल के बाद में आती है. Finding new clients. This is out of a survey done by Jaipur CA Group. 2019 में मैं जब उनके यहाँ बोलने गया तो they had done a survey. Free advice. I think ये सबसे बड़ा problem है अपना. अपन admit करें कि नहीं? And my earnest request to myself and all people present here, please don't give free advice to your morning walk friends, to your relatives who are not your clients or anybody else. अपनी बहुत खराब आदत है, कोई आ गया वो मॉर्निंग वॉक में, नीलेश भाई मेरे इधर ये था, मैं ऐसे क्या करूँ, और मैं भी आई एम एडमिटिंग आई एम ऑल्सो कल्प्रिट ऑफ इट, अरे ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, बट आई डोंट नो इस फुल फैक्ट्स, उसका सीए और कोई है. प्लीज डोंट गेट इनटू दिस फ्री एडवाइस अपने को, एंड इट विल नॉट हेल्प. फ्री एडवाइस देयर आर नो फ्री लंचेस, उसकी वो वैल्यू ही नहीं होती है. Then staff articles crunch will discuss all this thing. Data maintenance security. Only 16% have said this is a problem. In my view, this is a wrong estimate. We don't even realize that data maintenance and security, data security is the biggest challenge for all of us. And again, another area where they said delegating work is hardly 15% of their problem. In my view, this again is the biggest problem for all of us. We don't know how to delegate work. अपने को लगता है मैं ही तीरंदाज हूँ, मैं काम करूँ 100% परफेक्ट है, मेरे जो जूनियर्स है काम कर ही नहीं सकते. और मैं उसलिए I keep on doing it, but we need to delegate. He may do 80-90% like you, but please delegate. How many of you, there are a lot of seniors here, how many of you have got a succession plan in place? Just a raise of hands. Do you have a succession? आपकी खुद की sole proprietorship है, partnership है? Again, the biggest problem of our profession is we don't have our grandparent firm, I'm part of KKC and Associates, our grandparent firm was a superb firm called Damania Pandyan Bhajan, Parsi firm. They were auditors of Indian hotels, a lot of Tata Group companies, etc. One fine day, 2 senior partners expired, firm evaporated. There's no Damania Pandyan Bhajan now.
beautiful, excellent firm. We are proud of that firm, that we have got a lineage of that firm. But firm ही नहीं है. So we need to institutionalize, not only for the sake of your continuity legacy, but even if you want to monetize your practice, unless you have got a succession in place, you will not be able to monetize your practice. आपको आप जब इसको 60, 65, 70, 75, 80 जब भी आपको retire होना हो, you have to earn something out of the practice. Unless you have got a succession plan, you will not. And believe me, friends, we were a family firm, hardly few partners. The more we had other partners coming on board, the more client confidence and the more better the work, the more larger the work. As we are growing, it's a virtuous cycle. The clients are seeing you. आपने अगर जैसे आपने आपकी मतलब you add your partners etc. your team, they are watching you, and be rest assured your practice will grow. It's a chicken and egg situation. अपने हमें वो खर्चा नहीं बढ़ाना है, ये नहीं करना है. I don't know how many of us have invested in the practice. अपन सब practice से पैसा निकालते हैं जो भी कमाई करते हैं. कितने लोगों ने practice में invest किया है? Some of the youngsters raising their hands. We have to invest. So what are the challenges in practice? अपने तीन problem, 3S: service, satisfaction, and success. Service to the clients has to be good. That's what they expect. Success of the partners, that is another area, and satisfaction of the professional with अपने articles and chartered accountants अपने साथ में, और कोई cost account में company secretary होंगे. So if we satisfy all the 3S, so this is, we have to work around the 3 S's: service, satisfaction, success. If you are able to work on this, automatically your growth will happen. So I will very quickly go through rapidly what are challenges in the economic, increasing cost, manpower cost is going up. Sorry, I am not changing slide. How many of us, आज suppose कोई client आपके पास आता है और आपको बोलता है कि आप मेरे को ऑडिट करके दो या कोई टैक्स रिटर्न फाइल करके दो, जो भी है. आज suppose I am a sole proprietor. What is your USP to the client? तो क्लाइंट बोलता है मेरे को बड़े फर्म के पास जाना है, कोई 5 पार्टनर की फर्म है, 10 पार्टनर की फर्म है. How do you convince the client that what is your advantage as an individual? Say sole, I'm just giving an example of sole proprietor. I think many of us are sole proprietors here. तो कई जगह चक्कर मार के हमारे पास आता है, तो मतलब कितने पार्टनर हो दूसरे ही नहीं है. Sorry. बहुत से जगह चक्कर मार के हमारे पास आता है. कई लोग यंग लोग आते हैं, गूगल पे आपका नाम सर्च किया, हम लोग आए, रिटर्न भरना है करते हैं. नहीं, वो तो अच्छा ही होता है, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छा है, आपका रेफरेंस. मैं ये बोलता हूँ कि आप सोल प्रोप्राइटर हैं, मैं क्लाइंट हूँ, बड़ा क्लाइंट हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं बड़े क्लाइंट के पास जा रहा हूँ. हाउ विल यू कन्विंस हिम दैट ही शुड रिटेन विथ यू? व्हाट इज योर प्लस पॉइंट टू रिटेन एज अ सोल प्रोप्राइटर फॉर अ लार्ज क्लाइंट टू कंटिन्यू विथ यू? मेरे पास है, और जब तक मैं अच्छी सर्विस करूँ तो जाएगा नहीं. Anyway, I think I have not got the answer. The answer is, if I am an individual and I am handling a large client, I am looking at audit, I am looking at tax, I am looking at GST, subject to मैंने जो आगे बोला हो. I will give a holistic solution. He goes to a large firm, a big 4. Audit और कोई करेगा, tax और कोई करेगा, GST और कोई करेगा. He will not get a holistic answer of any problem. Number 1. दूसरा, आप जो कोई आपका सर्टिफिकेट खिलाते हो उसकी वैल्यू क्या है? What is the value of a certificate? See, we don't project. अपने क्या है? अपने इतने दबे हुए हैं कि we don't see. You need to project what is, we have to think of and project what is the value of a certificate. अपन 1000 रुपया, 1500, 2000, 5000, 10,000, 50,000, जो भी whatever we charge fees for the certificate, but what is the value? How do you tell the client what the value of a certificate? Anyone? As the Prime Minister said, we are the second most important certificate in the sign in the country. First is the President of India. His signature is valid all across the country. Second, not even the Prime Minister, it is the CS certificate. आप शेगांव में सर्टिफिकेट करो, वो कश्मीर में एक्सेप्ट होगी, कलकत्ता में होगी, कंडला में होगी, कन्याकुमारी में होगी. So we need to understand, are we communicating this value to the client? तो क्या आप खाली में थप्पा मार के दो? What is the, that is a typical slang? एग्री करते हो क्या नहीं? अरे आप लोग सब नींद में हो कि मालूम नहीं. So let's admit, I think let's admit and let's change. See, अपने जब तक चेंज नहीं करेंगे, अपने खुमारी नहीं होगी अपने काम में कि मेरी सर्टिफिकेट वैल्यू इतनी है, you will not be able to. So that projection has to come from you. It cannot be कोई बाहर से नहीं लाने वाला अपने लिए. अपने खुद को अपने, so that we need to project. So projection is very bad.
We believe the competitive environment is there. I showed competition is, रहता है, for opportunity बहुत है. I'll again show some further things. Do we agree that client loyalties are no longer as stable as earlier? Client क्यों हो रहा है? Because the next generation of client is coming up and he doesn't want to do these things in the old way. US से सीख के आया और किधर से सीख के आया, he has seen the world. He doesn't want the old style of working. He wants a new style. तो उसके लिए भी succession planning important. You need youngsters to bring in the new style within yourself. We also need to change. And lastly, lack of billing skills throws the smaller firms into a vicious circle. अपनी जो billing skills की जो तकलीफ है, मैं उस पर और ज़्यादा discuss करूँगा. But अपने problem क्या है? We charge low fees. अपने generally fees are low. Lower remuneration to staff, inadequate staff, and infrastructure is less in the office. अपने लिए कम income है, वो लेता है, that pushes us to increase the billing. और होता क्या है? We do lot of low value fee work to increase the gross volume. उसके लिए अपना time नहीं होता है for technological upgradation, housekeeping, capacity building, low quality of services, low fees. So this is the vicious circle we are. Do we agree with this or no? So we need to break through this. Regulatory challenge of the income tax में काफ़ी simplification हो रहा है. I need lot of things online. AIS से a lot of other service providers are coming up now for return filing, etc. Regulatory actions. I talked about NFRA. अभी peer review हो रहा है, quality review board है, financial reporting review board है, and now ICAI, I am told Aniket ji was chairman of FRRB, the current president, few years back. They are going to use bots and robots to review the financial statements. अब तक तो खाली 100-200 स्टेटमेंट देखते थे लिस्टेड कंपनीज के, बड़े कंपनीज के, फिर NFRA आ गया तो दे गॉन इनटू लार्ज प्राइवेट कंपनीज. Just imagine if they start seeing bots. And friends, believe me, I've been part of the district committee. The quality of the financial statements which comes during the case levels are very bad. और आदमी 90% of the problems of district cases are two partners fight, CA को blame कर दिया. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में झगड़ा होता है 2 ग्रुप में, CA को blame कर दिया. एक क्लब में झगड़ा हुआ 2 ग्रुप के अंदर, सीए को ब्लेम कर दिया. और तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आते हैं हाथ में, इतनी गलतियां होती है, लेस सेड द बेटर. सो अपने क्या, वी आर टेकिंग इट एज ग्रांटेड, गार्बेज इन गार्बेज आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर. बट प्लीज फोकस एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. समवेयर यू विल गेट स्टक. सो डिफरेंट केसेस अपने बात की. एक GST was a major game changer for us as a profession. I think during that time, lot of substantial practice moved away from the sales tax or the VAT professionals to profit. But in my view, though I was the president then and we were very happy the amount of training which we had done, lakhs and lakhs of hours of training. But I think हम लोग उसमें फंस गए compliance के अंदर. The amount of time we are spending in the compliance, अपन वो क्या यहाँ तक वो compliance का, we didn't realize that when we went into that area, but we need to move out of it. और एक चीज़ दूसरी समझ लो, जितना काम अपन GST कंप्लायंस का कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कर रहे हैं, या इवन ऑडिट, आई एम सेइंग, टाइम इज नॉट फार अवे दैट विल बी डन बाय टेक्नोलॉजी. कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, compliance with auditing standards, compliance with taxation law, compliance with GST law. AI, artificial intelligence, bots will do that work. We will have to change ourselves. The routine work, हम जो routine compliance work कर रहे हैं, we need to move out of it. Technological changes, ऐसे अपने बताया, lot of unlearning and learning we need to do. We talked of technologies, I talked of robotics right now, machine learning, AI, and this is, friends, a big opportunity for the youngsters over here. I tell you, we are still far away as a profession in adopting AI and even data analytics and all. हम लोग जिसके बाल सफ़ेद हो गए, हम लोग अब इंटरेस्ट नहीं, हमने हमारा टाइम निकाल कर लिया. We are not going to adopt to those technologies. For the youngsters here, you please see how you can adopt AI into whatever you are doing. आप ऑडिट कर रहे हो, टैक्स कर रहे हो, GST कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उस पर कैसे आप उसको अडॉप्ट करें. दैट itself is so a huge opportunity. And I think we need to do much more work there. And that is also making the clients much more independent, more use of technology. Do we agree on this challenges on the human capital side? Staff loyalty is very thin. Staff की बहुत attrition हो रही है. All of us face, whether it's official or metro,
कोई फ़र्क नहीं है, सब जगह चैलेंज है। तो इसीलिए एम्प्लॉई एंगेजमेंट कैसे आप उसको अपार्ट फ्रॉम द वर्क मनी, एंड बिलीव मी, आप कोई भी बोलेगा कि मैं उसको इतना एक्स पैसा दे रहा हूँ, इनफ नहीं हो रहा है, आते हम रोते रहेंगे। हम जो मार्केट है वो है, आज बीपीओ केपीओ सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स पगार दे रही है, इंडस्ट्री दे रही है, तो अपने देना ही पड़ेगा, नंबर वन। और उसमें लेट्स एक्सेप्ट कि अपना ऑफिस एनवायरनमेंट इज हॉरिबल। आज बीपीओ केपीओ में जाएगा, मस्त कैफेटेरिया है, खाना पीना फर्स्ट क्लास है, एवरीथिंग इज गुड। अपना ऑफिस में क्या वो फाइल्स के गिफ्ट पड़े रहते हैं। हाउ गुड इज योर ऑफिस? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, डज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव गॉट अ मॉडर्न ऑफिस? प्लीज इंट्रोस्पेक्ट। आई एम सीइंग फ्यू हैंड्स रेज्ड। सबसे पहले आप थोड़ा इन्वेस्ट करो, आपकी ऑफिस ठीक करो। आपको अगर लोग चाहिए, इफ यू वांट पीपल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज प्लीज इंप्रूव योर ऑफिस एनवायरनमेंट एंड स्पेस। अदर यू आर नॉट गोइंग टू गेट पीपल, लेट मी टेल यू। अगर मेरे को आपके यहाँ ज्वाइन होना हो, मैं क्यों ज्वाइन करूँगा? आई गॉट 1000 अपॉर्चुनिटीज। आपके ऐसे थंडर, आई एम गिविंग माय ओन ऑफिस एग्जांपल। पहले पुरानी हमारी ऑफिस थी, इट वाज जस्ट लाइक वुडन, एकदम ड्रैप। आजकल तो कलरफुल ऑफिस चाहिए, एकदम जैजी। करना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। सो प्लीज चेंज, नहीं तो रोते रहोगे आप, आपको आदमी नहीं मिलने वाला। छोटी छोटी चीजें हैं, बट यू हैव टू डू दैट। सो प्लीज इंप्रूव योर ऑफिस। Personal challenges. Do we agree that by nature we are docile and passive? Generally, एक आपके एक्सेप्शन होगा। अभी क्लाइंट 1 साल के बाद भी फीस देता, अपन कोई बोलते नहीं। डू वी स्पीक एनी टाइम? दैट शोज द नेचर ना, हमारा नेचर ही डोसाइल और पैसिव है। हाउ मेनी ऑफ अस पिक अप द फोन एंड टेल द क्लाइंट टू पे? 1 महीना हो गया, 45 days, 60 days, few of them are raising, I'm happy with you. We need to, कोई शर्म नहीं है। And I'll again take my from the experience. मैं कभी भी ओल्ड लीगेसी, हमारे यहाँ पे कोई दिन क्लाइंट को रिमाइंडर नहीं जाता था। 5-5 साल तक फी नहीं आती थी, रिमाइंडर नहीं जाता था। द मोमेंट TDS केम इनिशियली एंड देन GST केम, वी चेंज द सिस्टम, वी कांट अफोर्ड। वो तभी भलमनसाई का जमाना था। अभी मेरे ही जेब में से एक तो मैं कॉस्ट इंकर कर रहा हूँ लोगों के ऊपर, प्लस 28%, 10% GST और 18% आ रहे, 18% GST और 10% TDS। आई कांट अफोर्ड दैट। अलग एक आदमी रख दिया, फॉलोअप करता है, और मतलब जैसे ही बिल गया 15 दिन में रिमाइंडर जाएगा। 1 हफ्ते में नहीं है, पार्टनर्स और जो भी डायरेक्टर मैनेजर को जाता है, मैक्सिमम 45 days से 60 days में रिकवरी हो जाती है। 99% रिकवरी हो जाती है। एक आध कोई क्लाइंट जो प्रॉब्लम्स को छोड़ दो आप, एक कोई रियल एस्टेट क्लाइंट था हमारा, वी वेंट इनटू एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन 2017-18। एज ऑन 31st March 18, What was our pendency recovery? Any guesses? आप बोलते हैं 1-1 साल का। हम लोग एक टाइम हमारे 5-5 साल की रिकवरी थी। जिस दिन हम एक्रोल में गए, थैंक्स टू GST एंड TDS, टू रिड्यूस द रिकंसिलिएशन वर्क, व्हाट वाज द पेंडिंग रिकवरीज एट द ईयर एंड? एनी गेसेस? नहीं, 5%। क्रोज नहीं, परसेंटेज वाइज। मेरी तभी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी सर। सॉरी, 0% नहीं है, 10 से 20%। दुर्गेश, आई थिंक ही इज रीजन, इट वाज 2.5%। कि सबको फोकस था कि भी करना है, तो पूरा दिस सिस्टम चेंजेस। इट इज क्लाइंट को अपन ने खराब करके रखा है। वी हैव स्पॉइल्ड द क्लाइंट। और कोई इसमें बेशर्मी नहीं है। फॉलो अपनी खुद की फीस हमने मेहनत की है, फीस फॉलो अप में कोई वो नहीं है। एंड आई एम हैप्पी लॉट ऑफ फ्रेंड्स ओवर हियर आर हैविंग दिस थिंग, फॉलो अप एंड ऑल। सो आवर नेचर वी नीड टू चेंज। अगेन अग्रीड टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वर्क एट एनी कॉस्ट। अपने आप में क्या है, एक जन एक कॉस्ट पे काम कर रहा है, दूसरा जन घुसेगा उससे कम कॉस्ट पे। आई डोंट नो व्हाई वी नीड टू डू दैट। एंड आई एम नॉट ओनली सेइंग ऑफिशियल और इंडिविजुअल ना, ये बड़े से बड़े फॉर्म में हो रहा है। मेरा कोई, और टू दी एक्सटेंट फ्रेंड्स, मैं आई गिव एन एग्जांपल। 25-30 साल पहले रिजर्व बैंक कॉल्ड अस फॉर गिविंग अ कोड फॉर द इंटरनल ऑडिट ऑफ देयर मेन डिपार्टमेंट्स इन बॉम्बे, हमारे बिल्डिंग एक्सेट्रा। हमने 2-3 दिन टाइम एंड मोशन स्टडी किया। यहाँ पे तभी ऑनलाइन सिस्टम नहीं था कंप्यूटर का, स्टैंड अलोन सिस्टम होता है, बट लॉट ऑफ रजिस्टर्स। वी डिड अ कंप्लीट दिस थिंग। 10 बजे का टाइम है, 10:30-11 पहले रजिस्टर नहीं मिलेंगे। 5:30-6 का क्लोजिंग टाइम है, 4:30-5 से रजिस्टर लेना हो, प्यून आ जाएगा आपके पास से। तो काम इफेक्टिव इज, उसमें बीच में आधा घंटा लंच टाइम का निकालो। वी कोटेड अ फीस ऑफ 1,25,000 अ मंथ वे बैक 25 years बैक। और एक फर्म को उन्होंने बुलाया था, दैट फर्म हमारे से बड़ी थी वो, दैट फर्म कोटेड 45,000 रुपीज अ मंथ। तो काम उन्हीं को गया नेचुरली, हमको तो मिला नहीं। वो आई मेट दी पार्टनर उस फर्म का, जो आफ्टर सम टाइम एट भावनगर एयरपोर्ट। मतलब
कैसे चल रहा है ऑडिट, नीलेश में मेरे बाल खींच रहा हूँ, मैंने क्यों ऑडिट लिया, और आपने असेसमेंट ही गलत किया था। ये तो नया काम था जिसमें ये अपनी होती, आप तो एग्जिस्टिंग काम में कोई 1 लाख चार्ज कर रहा है, कोई 50,000 में करने तैयार है, 50, व्हाट इज द ग्रीड, इनफ वर्क फॉर एवरीवन, लेट्स नॉट बी इन अंडर द ग्रीड, सो प्लीज डोंट हैव ग्रीड ऑफ। और वो जो फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ हमको पता चलता था दे आर कोटिंग, वी नेवर यूज्ड टू कोट, हम लोग उतना टाइम भी वेस्ट नहीं करते थे उसमें मेहनत करने का कोटेशन के लिए, वहाँ है वो दे आर गोइंग टू, हम लो बॉलिंग बोलते हैं उसको, अंडर आर्म बॉलिंग करते हैं ना, लो बॉलिंग इन दिस टर्म्स, so we never used to participate. So greed, then अपने communication skills we need to improve. अपने communication skills are very poor. PowerPoint presentations ये वो बहुत जरूरी है. Youngsters who are there, just oral is not enough. Society's perception is we are a necessary evil. कि just because of government regulation we need to do the work. एक और एक question है आपके पास for you. You are अपने आज समझो 30 सितंबर का अपना डेडलाइन है कोई टैक्स ऑडिट का, कोई 22 सितंबर के पास नया क्लाइंट आता है आपके पास काम करने के लिए, व्हाट इज द फीस यू आर गोइंग टू चार्ज, जो आप समझो उसी टाइप के क्लाइंट करते हैं वही फीस चार्ज करोगे या कम करोगे या ज़्यादा करोगे? दुर्गेश भाई लेते ही नहीं है, पर आर यू चार्जिंग वो? मेरा जहाँ तक मानना है हम लोग इतने ग्रीडी है काम के लिए, समझो 22 तारीख को भी अपने रात और 12-1-2 बजे तक काम कर रहे हैं, पर उसी फीस पे वो काम करें, क्यों? वाई नॉट अ पीक पीरियड फीस, उसको ज़्यादा मतलब लगाओ फीस, आप जो लास्ट मिनट आ रहा है you are anyway going to burn the midnight, why not charge a premium for that? Of course, this my view is not accepted by many of the senior professionals. ये मेरा personal view है, we should charge premium time charges separate and peak and non-peak time. जैसे आप hotels में जाते हो, peak time pricing is more, non-peak time is less. कोई भी आप hotel में जाओ 5-star hotel इधर किधर भी, so why not for our services? So please think on that. There are 2 views. I am giving my view. I may be wrong. How many of us are charging? ये जो टेलीफोनिक क्लाइंट का फोन आता है, मैंने जमीन बेच दिया, शेयर बेच दिया, इसका कैपिटल गेन टैक्स का क्या होगा, टीडीएस का क्या होगा, ये क्या होगा, डू वी नोट डाउन? अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू चार्ज फॉर योर, व्हाट इज द बिलिंग विच यू डू फॉर इनकम टैक्स फीस? एक लाइन बिल जाता है, बीइंग इनकम टैक्स फीस फॉर द ईयर एंड सो एंड सो, बाय एंड लार्ज, डू वी एग्री? 1 लाइन बिल, व्हाई डोंट वी राइट व्हाट वी डू इन दैट 1 लाइन? 4 टाइम एस्टिमेट देखे, असेसमेंट हुआ, रिटर्न फाइलिंग किया, जो भी हुआ, अपील हुआ, व्हाटएवर इज देयर, उसके अंदर अगर वो क्लाइंट ने फोन करके बीच में आपको साल में किया, आप लिखोगे तो पता चले कितना काम है, आप लिखते ही नहीं, हाउ विल यू नो? तो जितना आपका एग्जॉस्टिव बिल होगा, आपने देखा एडवोकेट्स के 3-3, 4-4 पेजेस के, सबने देखे, हियरिंग ऑन सो एंड सो डेट, एडजॉर्न, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, 3-3 पेज के बिल होते हैं और अमाउंट भी बड़े ही होते हैं। डू वी एग्री? सॉरी, हाँ, नहीं तो व्हाई डोंट वी राइट व्हाट वी डू? सी, आज क्लाइंट को अपन बताते नहीं क्या काम कर रहे हैं। एंड अनदर थिंग, टाइमिंग ऑफ द फीस। आज समझो आप, यू अगेन आई एम सेइंग फ्रॉम माय फर्म एक्सपीरियंस, वी वन अ अपील, इट्स अ वेरी क्रिटिकल अपील फॉर द क्लाइंट। इफ वी डोंट चार्ज द क्लाइंट एट द सेम टाइम, तभी ताजा है उसके दिमाग में, वो बहुत खुश भी है कि अपील जीत गए आप। सपोज 10 करोड़ की बेनिफिट हुई उसको, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो आपको चार्ज करना किया, ही विल नॉट क्विट। वही बिल आपका 6 महीने के बाद गया या साल भर क्या था, अरे उसमें तो क्या काम था। एंड आई टेल यू, आई वाज इन द क्लाइंट फेस, आई वुड बी रिएक्टिंग द सेम थिंग। इट्स अ ह्यूमन दिस थिंग। तो यू हैव टू चार्ज इमीडिएटली, जैसे ही काम खत्म होता है, यू हैव टू चार्ज। और ये जो टेलीफोन, आज मेरा जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर है, मैं फ़ोन करता, कोई तबीयत खराब होती है और हम लोग उससे मतलब पीरियडिकली सेटलमेंट करते हैं फीस की, 6 महीना, साल भर, जब भी वो कभी फीस मांगता नहीं है। और मैं देखता हूँ उसके पास 3-4 पन्नों का वो ये रहता है। इवन माई टेलीफोन कॉल इज नोटेड, अ जनरल फिजिशियन, डॉक्टर, माई टेलीफोन कॉल इज नोटेड। वाई डोंट वी नोट? एंड वाई डोंट वी tell our clients what we are doing in that 1 line bill? So that is the billing change which we need to do. I would request all of you to have a detailed billing. असर कुछ नहीं होगा, पता चले कितना काम हो रहा है। So now what are the practice management strategies? So see, basically it's self-evaluation. We need to look at the clientele, positioning, right sizing, fees and billing. These are the basic, for the practice, these are the 5 critical things. This is mainly for juniors, not for seniors.
सेल्फ इवेल्यूएशन पजल कि आपको क्या करना, प्रैक्टिस में जा रहे हो, डू आई रिक्वायर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. आपने समझो एक फॉर्म से यहाँ पे ऑडिट ही किया या सिर्फ टैक्स किया, सिर्फ जीएसटी. I think I will not get into this. You can have a look at it. This is more for youngsters. It is not necessary that you start your practice assuming you don't have experience. You can join a firm, and then after gaining more experience in a specific area, you can start your own firm. You can join an existing firm, grow into partnership. वो भी काफ़ी सारी opportunity, and suggested to seniors to have your succession planning. Be a retainer with some firm and specialize in any area. So there are various options available. और ये models है, sorry, I'm not going. These are the different models of practice. You can be a polyclinic, lot of specialists coming together, like अपने polyclinic होती है. You can be a boutique, मतलब specialized in certain areas, a boutique practice. You can be a retail store. Retail जो अपन regularly है, मैं audit भी करता हूँ, tax भी करता हूँ, GST, that is a retail. कोई भी गलत नहीं है, सब अपने हिसाब से. आपको क्या सूट होता है? Based on my earlier slides, you need to evaluate. There is self-evaluation. और यूएस में भी सभी टाइप्स ऑफ मॉडल है इन प्रैक्टिस में. सोल प्रोप्राइटर भी है, मिड साइज फर्म भी है, बड़ी फर्म भी है. इट इज नॉट कि यूएस में सब बड़ी फर्म है या यूके में, लंदन में. सो व्हाट सूट्स यू, यू हैव टू डिसाइड. सो ये लार्ज अकाउंटिंग फर्म्स का क्या मतलब, आई विल नॉट गेट इनटू दिस. सो अपने लिए क्या है प्रैक्टिस मैनेजमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स? व्हाट इज द स्टीयरिंग व्हील for our practice management? We need to leverage technology. बहुत important है. जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, आपका people dependence कम होगा, your efficiency will increase. Client relationship management, very important. मैंने खुद ने देखा, हमारे यहाँ पे भी challenge है. We are not able to spend more time on client relationships, but that itself is other than the work. काम के हिसाब से जो मारामारी तो अलग बात है, काम के अलावा भी client relationship has to be there. Risk management, succession planning बात की अपन ने. People strategy, how do you retain people? We talked of one is good office, employee engagement, how do we incentivize them, building and growing the firm. There are different practice models, association networking and planning for the firm. ये बाद में आप देख लेना कहाँ पे मार्जिन कम है, कहाँ पे मार्जिन ज़्यादा, किस लेवल ऑफ प्रैक्टिस पे. आई नॉट. वेलकम टू क्लाइंटल एंड फीस. एक अपना वो चैलेंज आता है कि हाउ डू आई इंक्रीज वर्क. आप ऑफिस में है, कहीं पे भी है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी एरिया ऑफ आपकी प्रैक्टिस को, यू नीड टू स्पीक आउट. आप इनकम टैक्स में हो, इंटरनेशनल टैक्स में हो, जीएसटी में हो, ऑडिट में हो, कंपनी लॉ, जो भी है, IFRS, इंड AS, इतनी सारी चीज़ें हैं. यू शुड बी विजिबल. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ माउथ. आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसका आने वाला है. हाउ मेनी ऑफ यू यूज सोशल मीडिया? आई डोंट मीन फेसबुक. हाउ मेनी ऑफ यू यूज लिंक्डइन? I think quite a few. But how many of you put relevant practice related information there? बहुत जरूरी है. सीनियर्स के लिए भी है कि आप कोई भी नई चीज़ करते हो या कोई नया केस लॉ या कोई आपने किया या कुछ आपने पढ़ाई की, 3-4 लाइन उसकी डाल दो लिंक्डइन पे. एंड इंडिविजुअल विद नॉट एज अ फर्म बेसिस. आई थिंक इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन बोलती है, चितले साहब इज हियर, इज चेयरमैन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड. इन माय व्यू, फर्म्स कैन नॉट पोस्ट बट इंडिविजुअल्स कैन पोस्ट योर नॉलेज. तो जो भी एरिया में आपकी जो नॉलेज है, 2-3 लाइन. सो दैट इज दैट सोशल मीडिया इज विजिबल टू द होल वर्ल्ड. क्या से दुर्गेश भाई इज एक्सपर्ट इन इंसॉल्वेंसी और चितले साहब इज एक्सपर्ट इन टैक्स. वी नो इंडिविजुअली, बट एट अ कलेक्टिव लेवल वी हैव 350,000 मेंबर्स, 1 lakh. हाउ डज द वर्ल्ड नो? सो पुट योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया, लिंक्डइन स्पेशली, 2-2, 3-3 लाइन जो भी आप एरियाज करते हो, वेरी इफेक्टिव. फिर स्टडी सर्कल्स, ऑफ कोर्स वी डिस्कस स्पीकिंग, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल नेटवर्किंग. आज इंस्टीट्यूट हैज कम आउट ऑफ फैंटास्टिक नेटवर्किंग guidelines अपने domestic के लिए, alliance, or I think the 3 models which are there. I would recommend a separate session thereon. नेटवर्किंग करो ऑल ओवर बेसिस में. जैसे आप अकोला में हो, आप अमरावती में हो, देयर विल बी स्पेशली जीएसटी का काफ़ी कम आ सकता है. जो लोकल वो सेल्स वाले वगैरह हैं, डेवलप फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. एंड सो नेटवर्किंग इज नॉट ग्लोबल नेटवर्किंग. आई बिलीव सम डिस्कशंस आर गोइंग ऑन इन द काउंसिल. दैट ऑल्सो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. बिजनेस डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड एम्पेनलमेंट्स. सो अपने जनरली, जैसे मैंने बोला, वी ट्राई टू ग्रैब मोर एंड मोर वर्क एज वी ग्रो. आज जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं जो भी छोटे बड़े क्लाइंट सब ले लेता हूँ. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ क्लाइंट, उसकी जोग्राफी, साइज, इंडस्ट्री और क्लाइंट की क्या नीड है. वी नीड टू एक्सीड द एक्सपेक्टेशन. तो व्हाट इज वैल्यू फॉर अ क्लाइंट? इज इट compliance? Is it cost optimization? Is it advisory?
So you need to decide who is your ideal client. How many of you have said no to any client for some work? थोड़े बहुत हाथ देख रहा हूँ, काफी सारे नहीं. एक टाइम ना बोल के देखो कोई काम नहीं करेंगे, and you see the amount of confidence give you, especially small clients. And so I have classified, clients in three categories: quality, lover and fair, moderate and practical, and miser. The third type of clients can describe by the definition of cynic given by Oscar Wilde. What is a cynic? A man who knows the price of everything and the value of nothing. So do we agree कि अपने पास सभी के पास तीनों टाइप के क्लाइंट है, ABC, क्वालिटी लवर एंड फेयर है जो फेयर है फीस देने में, मॉडरेट और प्रैक्टिकल है, और थर्ड माइजर है. सबके पास है सभी. इट इज बराबर होना ही चाहिए. मेरा सुझाव है स्पेशली सीनियर्स लाइक यू, प्लीज कट डाउन द थर्ड कैटेगरी क्लाइंट. और मैं जो बोल रहा हूँ मैं खाली पूरा ज्ञान, वी डिड दैट इन 1989-90. दैट टाइम वी वर द लाफिंग स्टॉक ऑफ द मुंबई. एक क्लाइंट को एक एक फाइल आप बिल्ड कर. लकीली माई फादर एक्सेप्टेड आवर यंगस्टर सजेशंस. We cut down 80% of the volume of our practice, which was giving us 20% revenue. 20% client was giving 80% revenue. We focus on them, and you are seeing the results now. That time you are the laughing stock, and especially seniors के लिए. मैं youngsters को भी इतना नहीं बोलूँगा you need to do all work. but जो seniors है, please cut down the C category. Let them go to the. आप खुद के juniors को जाओ सामने से. See, India में we cannot fire clients. We have to handle it. अपन होते थे अभी आज बड़ा आदमी बन गया ये वो our social. तो वेरी नाइसली कि मैं अभी मेरी एज बढ़ रही है कि मेरा मतलब काम बहुत बढ़ गया है तो मैं ये जूनियर है इसके पास जरा काम करा लें. राइट, दैट्स हाउ वी हैंडल द वर्क व्हेन वी गिव अप. सो दिस इज कॉल्ड द पैरेटोस प्रिंसिपल. 80% ऑफ इवेंट्स एक्टिव इन लाइफ कंट्रीब्यूट टू 20%. या आई हैव गॉट अ नोटिस. 20% of events activities contribute to 80% of results. Hence, successful people concentrate on important few and pay less attention to trivial meaning. So we have to use this purpose. आप आपकी प्रैक्टिस की वो टेबुलेशन कर लो. 80-20 प्रिंसिपल और 70-30 will apply to you. So focus on the 20 or 30% clients giving you 70 or 80% of fees. That will be your, it should be your focus. So and how many of you have got time charts? आप एक एक काम के पीछे क्लाइंट कितना टाइम स्पेंड करते हो? एक दो हाथ दिख रहे हैं मेरे को. प्लीज हैव टाइम चार्ट्स. कितना टाइम आप स्पेंड करते हो? आप साल के एंड में देखोगे शायद आपका पर आवर रेट विल बी लेस देन अ इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर. प्लीज डोंट पार्डन मी. और मैं खुद की मैं ऑफिस में मैं देख के चुका हूँ. लेस देन अ इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर. आप इतनी गधावाली करके आप इतने साल नहीं, एक तो अपने वो करते हैं अपने आर्टिकलशिप और प्लस ट्रेनिंग पढ़ाई करते हैं कस के, फिर ऑल कंटिन्यूस अपग्रेडेशन की पढ़ाई करते हैं. उसके बावजूद आर मैन आवर रेट इज लेस देन अ इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर. सो नीड टू फोकस दैट. उसके लिए टाइम चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और यू शुड हैव मैन आवर रेट. ये जस्ट आपको हेल्प करेगा कैसे मैन आवर रेट डिटरमाइन करना है. ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया. ब्रेकअप ऑफ ऑल सर्विसेज, एग्जॉस्टिव बिल होनी चाहिए, इमीडिएटली बिल रेज होना चाहिए, मॉनिटर आउटस्टैंडिंग बिल्स, नो कंसेशन टू एनी क्लाइंट एक्सेप्ट एकदम ही डिफिकल्टी में हो तो. एक चीज, प्रोवाइड वैल्यू एडिशन टू क्लाइंट्स. अ सर्टिफाइड क्लाइंट विल ऑनर योर बिल्स विद प्लेजर. आप मेरे को बोलिए कि ऑडिट और टैक्स में आप वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हो? क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो? व्हेन आई स्पीक ऑफ वैल्यू एडिशन, एनी सजेशंस ऑन? आप नॉर्मल ऑडिट करते हो, टैक्स ऑडिट करते हो, प्राइवेट कंपनी करते हो, लिस्टेड कंपनी करते हो, व्हाट इज द वैल्यू एडिशन अपार्ट फ्रॉम गिविंग द ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑल? डू यू डू एनी वैल्यू एड? डू यू टॉक टू द क्लाइंट व्हाट यू ऑब्जर्व देयर कि यहाँ पे तू कॉस्ट कम कर सकता है, यहाँ पे रेवेन्यू लीकेज? क्यों आप ओरली बात करते हो कि जो आप देखते हो आपके नब्ज है? तो प्लीज डॉक्यूमेंट दैट. जो भी ऑफिशियल चीज आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, अनऑफिशियल चीज मत लिखना. जो ऑफिशियल चीज लिख सकते हो बुलेट पॉइंट्स करके उसको खाली भेज दो या पावर पॉइंट करके भेज दो. एंड यू सी द डिफरेंस. वी स्टार्टेड डूइंग दैट, आई एम टेलिंग यू, समवेयर इन 90s. एक हमारा बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग क्लाइंट था. वहाँ पे मैनेजमेंट लेटर, सजेशन लेटर बोलते हैं, जो एक तो ठीक है ऑडिट हो गया उसमें उनके सुझाव के लिए. उनकी एक ग्रुप थी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, जहाँ पे कोई सजेशन ही नहीं था. अब इन्वेस्टमेंट कंपनी साल में 2 ट्रांजेक्शन और 3 ट्रांजेक्शन, क्या आप उसमें एडवाइस दो? तो उसका जो बंदा संभाल रहा था बोले नीलेश भाई आपको जहाँ वहाँ पे जो आप देते हो हमको क्यों नहीं देते सजेशन लेटर? So that is how I know it is. So please give value addition. आप जो भी उसको सुझाव देते हो उसको डॉक्यूमेंट करके, जो राइटिंग में है वो याद रहेगा, जो ओरल है वो कोरा है भूल जाएंगे. राइटिंग में कहीं ना कहीं के फाइल में रहेगा. साल 2 साल 5 साल जब भी वो इवेल्युएट करते हैं रिलेशनशिप को, दैट विल बी हैंडी. और एक अपने इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेटरी फीस का जो लिस्ट है, ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दैट.
कि रिटर्न का क्या, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग वो बहुत ज़्यादा फीस उसमें लगी हुई है। सॉरी, आई एग्री विथ यू। तो मेरा एक दूसरा सुझाव है, अकोला में आपके पास एक क्लाइंट आता है तो बोलते हैं मतलब आप इतना ले रहे हो, फलाना फलाना 5,000 ले रहा है, वाई शुड यू डू दैट? आपको जो उसमें आज इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेड फी एक बाजू, अकोला इज अ स्मॉल प्लेस, 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिसिंग, वाई डोंट यू कम टुगेदर, डिसाइड व्हाट आप समझो। मैंने तो देखा है बॉम्बे में, यू गो टू, आप एक कोई वेजिटेबल मार्केट में जाओगे एक पर्टिकुलर एरिया में, द प्राइसेस विल बी सेम। At an unorganized, uneducated level, prices are same. At our level, why should a client come and tell to us कि फलाना X कर रहा है, ढीकना X कर रहा है? Why should they say? Why can't you come together? फिर जिसके पास भी जाए, आज समझे आप डिसाइड कर लो फीस। इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा बोला है, मारो गोली उसको, आप डिसाइड कर लो। इनफॉर्मली, इनफॉर्मली तो होगा। इनिशियली 100 में से 10-20 लोग नहीं फॉलो करेंगे, 70-80 भी करेंगे, एक के दूसरे, इट विल बी विद इन द सिस्टम। तो प्लीज डू दैट। सॉरी, ये बाद में आप देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड विथ यू। आई स्पोक ऑन के बिलिंग एंड ऑल, बट सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड also is important. People with money first attitude become so money conscious that they forget money cannot be harvested unless they plant the seeds that grow the money, and the seed of money is service. That is why put service first is an attitude which creates wealth. Put service first and money takes care of it. So मैं एक खाली एग्जाम्पल दूंगा आपको। Year 1999, one client approached us. He was setting up an ERP to help him set up the ERP. For whatever reason, हमारे पास उसका तजुर्बा नहीं था. He didn't engage us. ERP implement हो गई, बाद में उसने हमको कहा कि देखो उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है ERP का। तो स्टार्टेड रिव्यूइंग द ERP। तो हमने जो एस्टिमेट किया, हमारे लिए फर्स्ट टाइम वो काम था, हमने 4 लाख की फी कोट की, 4 महीने लगे, वॉज टाइम एस्टिमेट, बट वी आर कंप्लीटली रॉन्ग ऑन द टाइम एस्टिमेट। 8 महीने लगे। द क्लाइंट वॉज वॉचिंग अस, दिन रात मेहनत थी, सीनियर टीम वर्किंग ऑन इट। आफ्टर वी गेव द प्रेजेंटेशन, 4 महीने से खत्म होने का है, उसके पहले मेरी टीम आई, सर अपने 4 महीने खत्म हो रहे, शुड बी आस्क फॉर मोर फीस। बिल्कुल नहीं, अपन ने कमिट किया है, पहले काम खत्म करो। 8 महीने लगे, काम खत्म हुआ, क्लाइंट वॉज वेरी हैप्पी। वी जस्ट रिक्वेस्टेड, 4 लाख की फी हमने प्रपोज की थी। वी टोल्ड हिम हमको 8 लाख चार्ज नहीं करने हैं, बट हमारी कॉस्ट इतनी होगी, आप हमको 5.25 या 5.5 लाख। एक सेकेंड, बिकॉज द वर्क वॉज सक्सेसफुल, क्लाइंट वॉज हैप्पी, नॉट इवन दैट इज सर्विस फर्स्ट। एक टाइम आपने काम हाथ में ले लिया, देन डोंट। अपने यहाँ पे काफ़ी टाइम पब्लिक सेक्टर का काम ले लेते हैं, फीस कम है और काम की कंकरेंट ऑडिट ये वो, क्वालिटी नहीं रहेगी काम पे तो आप फंस जाओगे डिसिप्लिन में, इधर उधर किधर भी। तो बी केयरफुल। This we discussed. Job assignment should be, office environment has to be good, technology we discussed. Make product of services, very important. अपने क्या, most of the work is individual, but आपने समझो एक काम किया, कोई सिस्टम मैनुअल बनाया किसका, SOP बनाया, उसको कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कंपनी फॉर्मेशन, these are all we can make products, तो उसका अपना मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। How many of you are making engagement letters for whether it is audit, tax, etc. Engagement letter कौन, मेरे को 1-2 हाथ दिख रहे हैं खाली। जो भी आप काम करते हो, और स्पेशली आप में मेरे को एक मतलब क्या लमसम फीस वाले कितने हैं, कि जो क्लाइंट आता है मेरे को ऑडिट, टैक्स, GST सब एक लमसम फीस वाले कितने क्लाइंट है? काफ़ी है। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वो लमसम वाले भी हैं तो उसको लिस्ट कर लो क्या क्या होगा। मेरा तजुर्बा बहुत ख़राब है। हम एक कोई ऐसा एक ही क्लाइंट करते थे लमसम वाला। एक दिन कोई फेमा का मैटर आया कि ईडी की नोटिस आई, क्योंकि 500 पाउंड कुछ यूके में रह गए थे ब्रांच में, वो रिपैट्रिएट, वो लाइबिलिटी रह गई थी और नोट आती थी बैलेंस शीट में। तो ये इंकर्ड लाइबिलिटी, वो फेमा का कोई वायलेशन ऐसे करके। तो हमने इतनी मेहनत की दैट क्लाइंट ड्यूरिंग 90s, मतलब जब भी इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज नहीं था 90s के पहले, वॉज अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ गुआर गम। तो हमने पूरा उसका टैबुलेट किया कि इतना एक्सपोर्ट हुआ, ये हुआ है, हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज अर्न फॉर द कंट्री, कंट्री वॉज इन नीड। और 500 पाउंड वहाँ पे रहा था, वो भी क्या था, उसके कोई दे वुड हैव पेड द प्रोफेशनल्स डायरेक्टली ओवर देयर इन वाटर। 500 पाउंड इज नॉट बिग, एंड बट ईडी वाले तो यू नो हाउ इट इज, so they sort of levied a penalty. So I put my heart and soul into it, and then it went to, उनका ट्रिब्यूनल अलग होता है, वो अपने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बॉम्बे में आते हैं 6 months in a while। 1 सेकंड में ऑर्डर हमारे फेवर, 1 सेकंड, सो फ्रिवलस अ मैटर।
बट द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैड स्पेंट, क्लाइंट बोला होता है 1 लाख के अंदर आपका सब आ गया, जो भी हमारी फीस थी लमसम फीस में. नाउ लमसम फीस इज ऑडिट, टैक्स एंड जीएसटी और जो भी था तभी. ये कभी पार्टी नहीं था लाइफ में, एक वंस एंड द ओनली टाइम आई डन दैट. सो आप करते भी हो तो उसके अंदर एंगेजमेंट लेटर बना के इतनी चीज कवर होगी वो लमसम फीस में, नथिंग मोर. आइडियली अवॉइड लमसम फीस इफ पॉसिबल, बट अदरवाइज प्लीज स्पेसिफाई व्हाट विल कवर. पीपीटी तो करो ही करो, क्लाइंट को जो भी आप सुझाव देते हो वी डिस्कस दैट. ये अपन ने डिस्कस कर लिया. हाँ, आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट. Human capital management, I think this you can focus on in. So I'll just spend time on this. Just closing. Ingredients of successful practice. Human capital, whether it is metro or Mofussil, doesn't make a difference. You should have good people. Existing good clients, how do we retain? Clients usme 80-20 principle, 3S, whatever I discussed. Knowledge, health. I don't know how many of you are focusing on health. Please do that. Documentation I discussed. As I said, I'm not going to. इसमें थोड़ा अपने जैसे बोलते हो कि भाई ऑफिशियल एरिया में क्या करेंगे साहब, ये आपके लिए है. These are all the emerging areas, and there's no distinction between official and, in my view, you can focus on. You pick and choose what you like. Digital है, forensic है, bankruptcy है, risk assessment है, especially AI और youngsters. अपने जैसे लोग नहीं कर पाएंगे, बट youngsters को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज कर सकते हैं, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग अपने प्रैक्टिस एरिया में. आई थिंक दैट विल बी अ ह्यूज एरिया, एंड विच इज अकोला, मुंबई, नागपुर, इट डजंट मेक अ डैम डिफरेंस. इनफैक्ट आई बिलीव यू विल हैव मोर टाइम हियर. हमको तो कम्यूट में ही 2-3-4 घंटे निकल जाते हैं बॉम्बे में. यू विल हैव मोर टाइम टू फोकस ऑन दीज, पिक अप एनी ऑफ दिस न्यू एरियाज एंड यू विल बी एबल टू डू दैट. साइबर सिक्योरिटी. देयर वाज वन बॉय हियर हु इज विद अनिल भंडारी's firm. Can he raise his hand? I think भंडारी. हाँ, मेरा उसका सुझाव है कि भाई ही शुड टेक सेशंस हियर अकोला में जिधर भी, कि जो साइबर सिक्योरिटी बड़े फॉर्म में है, स्मॉल एंड मीडियम क्लाइंट्स के लिए कैसे एडवाइस कर सकते हो. आज मेरा सब्जेक्ट नहीं हो, जिसका जो सब्जेक्ट है जो उसको, इट्स नॉट के सभी चीज सिर्फ बड़े क्लाइंट के लिए, छोटे क्लाइंट को उतनी ही वो जरूरी है. अभी डेटा प्राइवेसी लॉ आ रहा है, वो सबको लागू पड़ने वाला है. ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, अपन देखो लोगों के लिए रोते रहे, अनलेस वी चेंज आवरसेल्फ. आज यूएस में 3 लाख अकाउंटेंट्स की शॉर्टेज है. कनाडा में मैं जब प्रेसिडेंट था 8,000 प्रोफेशनल अकाउंट की शॉर्टेज थी एवरी ईयर. ऑस्ट्रेलिया में 6,000 अकाउंटेंट्स की इन 2017-18 फॉर द शॉर्टेज, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू रिमेन एंड इंक्रीज. अगर हम अभी ऑलरेडी देयर इज लॉट ऑफ MRAs एंड ऑल गोइंग, और अपने जितने यंगस्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम समबडी वांट्स टू सेटल इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दिस दैट विल लूज देम unless we change our practice model and module. तो हम रोते रहेंगे हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है. हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने पूरे प्रैक्टिस को ओवरऑल विल कीप. अदरवाइज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. और नॉट ओनली फॉरेन में, इंडिया में बड़ी बड़ी फर्म्स है, बड़ी MNCs हैं, शेल है, मॉर्गन स्टैनली, सबके हजारों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं बैक ऑफिस में. डेरिवेटिव्स, अकाउंटिंग, ये वो, टैक्स, फलाना. बिग 4 के डिलॉयट की so many buildings in Hyderabad. ENY is in Bangalore, so many buildings, US IT returns and all. And not only big 4, now mid-sized firms are coming into India. Vidham, Eide Bailey, Eister, जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे. I am seeing those companies coming and doing back office over here. उधर के ऑडिट, उधर का टैक्स, उधर का जो भी काम है, तो अपने जो आपके यहाँ ट्रेन हो रहे हैं, आपके क्यों रहेंगे वहाँ पे. उसको मैं बोलता हूँ ना, the packages are more, everything is, the environment is better. So we'll be fighting a bigger war as things become. So please gear up. Will not speak on specialization. ये बाद में देख सकते हैं अगर स्पेशलाइजेशन आपको जाना हो. तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन. आपको अकोला में भी हाउ टू डिफरेंशिएट कि भाई मैं GST एक्सपर्ट हूँ, मैं इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट हूँ, मैं डोमेस्टिक टैक्स या मैं ऑडिट में एक्सपर्ट हूँ, या इंडेस, IFRS, व्हाटएवर. यू नीड टू हैव दोस स्ट्रैटेजीज. पोजिशनिंग इज इंपॉर्टेंट. आई विल नॉट स्पीक टाइम. So leverage using, either pooling of human resources, pooling IT infrastructure, suite of services. पर ये सब जरूरी होगा. आप बोलते मेरे इंडिया में I cannot afford an HR, I cannot afford IT, वो चलेगा नहीं.
Either you collaborate and harness all this thing. This is going to be essential. आपको listed company का मैं बोलता हूँ audit करना होगा तो इसको करना ही पड़ेगा. You have to come together where you can afford the cost. You have to grow. I think we discussed a lot on technology. I don't know if I want to cover anything more. I think I'll skip. These are the opportunities on the IT side. And these are some of the tools. I don't know how many of you, I want to spend a little bit time here. आप लोग कितने लोग this Teams use करते हो आपके काम में? MS Office Teams. See a few hands. संजय, मैं अगेन इसका एग्जांपल देता हूँ. हमारे ऑफिस में जस्ट बिफोर द पैंडेमिक ब्रोक आउट एक हमारा ऑडिट पार्टनर बोल रहा था आई एम यूजिंग दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टीम्स, बहुत अच्छा है, ये है वो. हम लोग सब सुनते थे. क्या जब तक सिर पे गिरता नहीं अपन इंप्लीमेंट नहीं करते. पैंडेमिक आया एंड वी वर वॉलंटरली प्रिपेयर्ड बिफोर द वी हैड अ वॉलंटरी शटडाउन फ्यू डेज बिफोर द पैंडेमिक एंड द होल ऑफिस वाज ऑन टीम्स. कहाँ गया माइक्रो? हाँ, ऑफिस 365. मैं इसका मेरे को कमीशन नहीं मिला उसको प्रमोट करने में. बट होल पैंडेमिक वी वर्क, बड़े से बड़े ऑडिट हमने 365 टीम्स के ऊपर हमने किए हुए. मतलब so that way HR में we were using spine technology. Now we are going to Zoho. आप बोलोगे as a CA firm we are adopting now Zoho ERP, Zoho HRM, HR module, or after some time we'll go to Zoho CRM. At a challenge, as Tally was easy for us to, Spine was easy. Spine is the HR this thing. But why? You have to challenge yourself. If you want to grow, you have to challenge. Okay, business as usual very easy. जैसे चल रहा है ऐसे चल रहा है. Nothing to disturb. But unless you challenge, yourself. We have started using. ये देखो नीचे ये Info करके है document. Caseware is a very famous document software which is very costly. We have started using Info from last year and it's superb. It's a UK based document software. We are very happy implementing. पहले हम लोग CCH का iPhone यूज करते थे और हमारा नाम यूज करके काफी लोगों को उसने माल बेचा अपना. We are not somehow implement. We are not able to implement that. On the data analytics, we have got IDEA in ACL. So we use IDEA. We use Data Sniffer also, which is below in data analytics. ये सब टूल्स यूज करने पड़ेंगे. आप जैसे काम करो या बैंक ऑडिट करते हो ब्रांच का भी, तो these tools can be effective for various things. So final thoughts. Change in the professional spectrum. It is going from compliance to consulting. Compliance with technology will take part of it in time to come. Power shift to the tech savvy. For the youngsters, this is the power is shifting from more experienced to technology savvy people. The mid-sized firms are caught in the middle. Monopolies are being threatened and client expectations are soaring. So what does the future hold for us? Traditional practice is losing their relevance. Mismatch in demand and supply leading to increasing staff cost. Practice becoming less attractive for newcomers. Automation making accountants irrelevant. Friends, ये मैं बोलना भूल गया कि अपन ने जब कंप्यूटर था तभी देखा डेटा एंट्री ये वो बहुत सारा वरी था. ऐसा भी जमाना आएगा जहाँ पे आपको अकाउंटिंग करनी नहीं पड़ेगी. अकाउंटिंग विल डन ऑटोमेटिकली बाय मशीन. खाली चेकिंग करना पड़ेगा, चेकिंग ठीक होने के भी. आज इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में ही चले गया हो. टू दैट लेवल बॉट्स विल बी डूइंग द अकाउंटिंग. मशीन लर्निंग से अकाउंटिंग अपने आप होगा, आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेकर विल गो आउट, ओनली चेकर विल बी रिक्वायर्ड. तो दैट्स वो खाली इसमें नहीं, ऐसे ऑडिट में जैसे आई एम ऑन अ बोर्ड ऑफ अ कंपनी है तो ह्यूज बैंक रिकन्सिलिएशन चैलेंज बैकलॉग. दे स्टार्टेड यूजिंग बॉट्स. रोबोट्स का जो बॉट्स आते हैं 70% of the bank reconciliation job done, only 30% पे आ गया. The whole volume got cut out. So it's going to make less relevant us. And knowledge being freely available, role of C is getting changed. आज पहले हम लोग तो माहिर थे knowledge में, तो everything is available at Google or even ChatGPT. So what is the asset management for our growth? We have to manage our skill, talents, knowledge, ability, client relation and reputation. And what is the vision going forward? As I told earlier, compliance to consulting, value protection to value creation for the clients, service provider to solution provider to clients, and from size to position. You have to position yourself. My apologies, I was not able to take a lot of Q&As. टाइम की 12 मिनट. नॉर्मली ये 2-3 घंटे का इंटरेक्टिव सेशन होता है. आज मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में गया, काफ़ी सारी स्लाइड नहीं, बट आई थिंक दी प्रेजेंटेशन भी अवेलेबल. आई होप मेरा ये पूरा जितना ये टाइम यहाँ पे मैं आया, ऑफकोर्स मेरी स्वार्थ थी इसमें गजानन बाबू के महाराज के ब्लेसिंग लेने की, बट माई पर्पज विल बी सर्व एज फार एज एड्रेसिंग यू. आपको जो इसमें ठीक लगा हो आप इम्प्लीमेंट करिए. स्टार्ट वॉकिंग दी पाथ. पहला कदम इंपॉर्टेंट है.
फिर कदम by कदम हमने ये ओवरनाइट नहीं किया कुछ भी. As a firm, it has taken us number of years. We started this journey in 1990 and we're still walking on that path. Still long way to go, especially on the technology side. So my earnest request to all those who are here, जो ठीक लगा हो, जैसे थोड़ा implement करना चालू करिए. And to the organizers also, जैसे बोले Akola, Amravati, small places, you can come together, have some common level of fees. That will be the idea. Nagpur is still big. I'm saying at least Nagpur in suburbs where you can do that. But please come together, and I think then the purpose will be served. Thank you. I request CA Prabhul Sanghvi sir to present a memento to our speaker CA Nilesh Vikamsey sir. Sir, to present a formal vote of thanks for the session. Thank you. One and all, what a fantastic session it was. I think the last few lines were very important. Of course, we learned 360-degree how to grow your practice and what are the newer areas. Before I conclude on vote of thanks, let me tell you one incident that there are a lot of initiatives which are implemented. Of course, Arpit did mention some of them. One is networking zone in newsletter. If you all have not seen that, please see that. There are advertisement without name and just numbers are given. People want partners in Mumbai, so geographical requirement. People want partner in Nagpur, Mumbai, Pune, Ahmedabad. Then there are area experts. Like people are saying required partner in GST, bank audit, taxation, XYZ. There are firms which are getting sold. So there was one last month, there was one last line in that newsletter saying that there is a firm available for sale at Surat. So out of my curiosity, I just called him up. I said that, there's a networking zone. You have given one advertisement firm up for sale in Surat. So I'm interested. What are the terms and conditions? So he said, day it was printed, the firm got sold. So this practical advantage of networking zone you can, utilize for expanding your practice, expanding apart from whatever practical tips which respected Nilesh Bhai gave. I think Nilesh Bhai had skipped one which is very, very important because of paucity of time, was specialization. I personally believe, if you want to grow your firm, you need to decide your area where you want to specialize, and based on that only the growth will be much faster. So gone those days of MBBS, हर आदमी को भी MD करना पड़ेगा अपने एरिया में, and that will be the faster growth. Last part, just 2 minutes, he said that whatever we implement that is important. उसपे से 3 प्रिंसिपल कहता हूँ हिंदी में. सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ. थैंक यू सो मच. There is an announcement to make about the lucky draw that we have, and the prizes that we have in the lucky draw is an asset that always appreciates and we all love wholeheartedly. Gold. So we have prizes worth almost 60,000 rupees here for the lucky winners. They are sponsored by Om Jewelers, Akola, but attendance is a prerequisite to participate in the lucky draw. With this, I, CA Gauri Kakrania, and I, CA Aditya Khandelwal, request the permission to conclude the session. Thank you.